Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel here Anand's Nursing File. Today in this video we are going to learn about the nursing care plan that is alcoholism, and through this video you learn this care plan very easily, and this video helps you to write the nursing care plan in examination work purpose or for the assignment work purpose. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप वीडियो के थ्रू आसानी से नर्सिंग केयर प्लान लर्न कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर एनसीपी ऑन एल्कोहलिज्म। Alcohol use disorder is a major health hazard with consequent physical, psychological, and social implications. Nursing care plan for alcohol use disorder are designed to reduce the disease production. Here, nursing care plan first risk for injury. Here we use different nursing process steps, that is nursing assessment, nursing diagnosis, goal, planning or intervention, rational implementation and evaluation. तो हम यहाँ पर डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट फॉर केयर प्लान नंबर फर्स्ट। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा आर नॉट एप्लीकेबल बिकॉज दिस इज रिस्क डायग्नोसिस एंड नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू हैजार्डियस नेचर ऑफ द अल्कोहल यूज, गोल होगा टू रिड्यूस रिस्क फॉर इंजरी। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफर द पेशेंट टू ए रूम नियर द नर्सेज स्टेशन। रेशनल होगा प्रोवाइड मोर कॉन्स्टेंट ऑब्जर्वेशन एंड क्विक रेस्पॉन्स टू कॉल नीड्स। इम्प्लीमेंटेशन होगा ट्रांसफर नियर टू नर्सेज स्टेशन। सेकेंड देखते हैं familiarize the patient with the layout of the room. Rational होगा injury is more likely to be experienced by an individual if the surrounding is not familiar. Implementation होगा patient familiarize with the room. Third, provide appropriate room lighting especially at night. Rational होगा improvement in lighting reduce fall and injury. Implementation होगा proper lighting available. Number 4, place item the patient uses within easy reach such as call light, urinal, water and telephone. Rational होगा items that are too far may require the patient to reach out or ambulate unnecessarily and can potentially be hazard or contribute to fall. Implementation होगा placed item in easy reach. Number 5, encourage assistance when getting out of bed. Rational होगा to promote safety. Implementation होगा encouraged. Number 6, place bed at the lowest possible position. Rational होगा keeping the bed closer to the floor reduces the risk of fall and serious injury. Implementation होगा bed placed near to lowest position. Number 7, use side rail on bed as needed. Rational होगा reduce the risk of fall. Implementation होगा side rail used. Number 8, eliminate or drop all possible hazards in the room such as razor, sharp object, etc. Rational होगा this is to prevent the patient from any unpleasant experiences due to dangerous objects. Implementation होगा all possible hazards eliminate. Number 9, intervention होगा referring the patient to an alcohol rehabilitation program. Rational होगा this intervention help the patient learn to abstain from alcohol and develop coping skill for managing difficult times. Implementation होगा report the patient. Number 10, educating patient on the consequences of alcohol use. Rational होगा the patient need to understand consequences of alcohol use and if possible seek help before it's too late. Implementation होगा education is given. After writing these interventions, we write here the evaluation steps. तो देखते हैं पर evaluation में हमको evaluation लिखना है. Now risk for injury reduce. जो हमारा गोल था to reduce risk for injury हमने अचीव किया बाय डिफरेंट इंटरवेंशंस. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर फर्स्ट को यहाँ कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं केयर प्लान नंबर सेकंड. केयर प्लान नंबर सेकंड को डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न. तो इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट कंप्लेंट अबाउट स्लीपिंग डिफिकल्टी एंड ऑब्जेक्टिव डाटा. हियर ऑब्जर्व द
Tiredness, mood changes, lack of energy, appearance changes, disheveled dress, dark circle under eyes. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू अल्कोहल यूज को होगा टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न। प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं। असेस स्लीपिंग पैटर्न रेशन होगा हेल्प इन इंटरवेंशन प्रोसेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस स्लीपिंग पैटर्न। नंबर सेकंड असेस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज। रेशन होगा द अब्यूज ऑफ अल्कोहल कैन कॉज इंसोम्निया। इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल अब्यूज। Number third, educate on basic sleep hygiene behavior. Ration होगा instruct to establish a bedtime routine and stick to it. Implementation होगा education given about sleep hygiene behavior. Number four, suggest way to improve the environment. Ration होगा room darkening, curtains can keep out bright light if needing to sleep during the day. Implementation होगा suggested about environment. Number fifth, do not drink fluids before bed or consume large meals. Ration होगा this cause sleep disruption. Implementation होगा advised patient. Number six, educate the patient to avoiding alcohol before bedtime. Ration होगा alcohol produce drowsiness and may facilitate the onset of sleep but interferes with the REM sleep. Implementation होगा education given. Number seven, encourage daytime physical activity but instruct the patient to avoid strenuous activity before bedtime. Ration होगा in insomnia stress may be reduced by therapeutic activities and may promote sleep. Implementation होगा encourage patient for activities. Number eight, encourage the patient to drink milk. Ration होगा tryptophan is a component of milk that promotes sleep. Implementation होगा encourage for milk. Number nine, introduce relaxing activities such as warm bath, calm music, reading a book, and relaxation exercises before bedtime. Rachel होगा these activities provide relaxation and distraction to prepare the mind and body for sleep. Implementation होगा introduce about the relaxing activities. Number 10, educate patient about their sleep requirement. Rachel होगा most people need at least 6 hours of sleep for normal memory and brain function. Implementation होगा education given. After writing these interventions we write the evaluation steps. तो देखते हैं यहाँ पर evaluation में evaluation हो गया पर स्लीपिंग पैटर्न मेंटेन। जो गोल था टू मेंटेन नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न वो हमने अचीव किया है बाई डिफरेंट इंटरवेंशंस। तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 3। केयर प्लान नंबर 3 होगा पावरलेसनेस। इसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज फॉर हेल्प एंड ऑल्सो वर्बलाइज फॉर लेक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ऑब्जेक्टिव डाटा देखते हैं पैसिविटी एंड नॉन पार्टिसिपेशन इन ट्रीटमेंट प्रोसेस होपलेसनेस। नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर पावरलेसनेस रिलेटेड टू अल्कोहल एडिक्शन। गोल होगा द पेशेंट विल वर्बलाइज एरियाज वेयर दे हैव कंट्रोल ओवर देयर अल्कोहल अब्यूज। इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट इमोशंस। रेशन होगा होपलेसनेस डिप्रेशन और apathy कैन बी एन एलिमेंट ऑफ द पावरलेसनेस। इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस द पेशेंट इमोशंस। नंबर सेकंड evaluate the patient's interest in decision making. Rational होगा powerlessness may cause a sense of disinterest in participations as the patient does not believe they have control over their outcomes. Implementation होगा evaluated the patient's interest in decision making. Number third, express genuine concern. Rational होगा if a health care provider can show genuine concerns and a vested interest in helping the patient overcome their alcohol abuse, it can provide a sense of hope. Implementation होगा expects genuine concern. Number fourth, role play assertive behaviors. Rational होगा the nurse can assist the patient in acting out scenarios that display assertive and confident responses. Implementation होगा role played. Number fifth, help identify area of control. Rational को help them identifying area where they do have control such as implementing other healthy
habits, setting boundaries, and reducing contact with those who are negative influence. Implementation होगा help identify area of control. Number 6, educate the patient and practice proactive communication skills. Rational होगा this technique help patient abstain from alcohol use, establish healthy connections, and regain control of one's own life. Implementation होगा education given. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं इसमें यहाँ पर केयर प्लान नंबर 3 का evaluation होगा. The patient verbalized area where they have control over their alcohol use. जो हमारा गोल था यहाँ पर हमने अचीव किया बाई डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशंस और उसको हमने यहाँ पर इवेल्यूशन में लिखा है. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 3 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 4. केयर प्लान नंबर 4 हो गए इनफेक्टिव कॉपिंग, जिसमें देखते हैं नर्सिंग इंटरवेंशन में नर्सिंग सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट वर्बलाइज दैट आई एम अनेबल टू कोप माई सेल्फ. ऑब्जेक्टिव डाटा इनएडिक्वेट फॉलो थ्रू विद गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव कॉपिंग रिलेटेड टू इनफेक्टिव स्ट्रेस रिलीफ स्ट्रेटजीज inadequate participation for stress. गोल होगा the patient will use appropriate coping and problem solving skills in place of alcohol use. इंटरवेंशन देखते हैं फर्स्ट असेस द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज. रेशन होगा दिस कैन एड इन इंटरवेंशन प्रोसेस. इम्प्लीमेंटेशन होगा असेस द पेशेंट हिस्ट्री ऑफ अल्कोहल यूज. नंबर सेकंड set limits and confront the patient effort in making excuses. रेशन होगा following through on the consequences of failure to maintain these limits necessary for effective treatment. Implement होगा implemented this intervention. नंबर थर्ड देखते हैं encourage the patient to verbalize fear feelings and anxiety. रेशन होगा this enable a trusting relationship that will help the patient to come to term with unresolved or unconscious problem in life that contribute to alcohol abuse. Implementation होगा patients encouraged. Number fourth, explore alternative coping strategies with the patient. Rational होगा providing alternative coping strategies will help the patient explore more appropriate options for managing stress, feeling, and relationship without abusing alcohol. Rational implementation होगा explore alternative coping strategies with the patient. Number fifth, assist in relaxation techniques, visualization or diversions. Rational होगा this allow the patient to relax and develop new way to deal with problem and stress. Implementation होगा assisted in relaxation techniques, visualizations and diversions. Number 6, encourage support available for the patient. Rational होगा support group and programs will help a patient with follow through care after discharge. Implementation होगा encouraged. Number last 7 number होगा पर providing support and encouragement to the patient. Rational होगा emotional support and positive reinforcement to motivate the patient to make changes. Implementation होगा encourage and emotional support provided. After ending these interventions, we write the evaluation steps. देखते हैं केयर प्लान नंबर 4 के evaluation. तो हमको evaluation में लिखना है the patient use appropriate coping and problem solving skills in place of alcohol use. तो इस तरह से हम यहाँ पर केयर प्लान नंबर 4 को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान नंबर 5. होगा यहाँ पर अल्टर्ड फैमिली एंड सोशल प्रोसेस, जिसमें देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव डाटा पेशेंट इज अल्टर्ड फैमिली एंड सोशल रिलेशंस. ऑब्जेक्टिव डाटा होगा असेस द पेशेंट्स फैमिली एंड सोशल प्रोसेस डायनेमिक्स. नर्सिंग डायग्नोसिस होगा यहाँ पर अल्टर्ड फैमिली एंड सोशल प्रोसेस रिलेटेड टू अल्कोहल एडिक्शन. गोल होगा द पेशेंट विल बी एबल टू पार्टिसिपेट इन फैमिली एंड सोशल प्रोग्राम्स. प्लानिंग और इंटरवेंशन देखते हैं. फर्स्ट, examine the patient's family background and investigate the involvement of the family member. Alcohol related event strength and opportunities. Rishnuga, this strategies will identify the area to focus on and potential for changes. Implementation होगा examine the patient's family background. Number second, educate both users and non-users on good behavior and addictive illness characteristics. Rishnuga,
Individuals can begin the change process by being aware of and understanding their behavior, avoiding and shielding, taking over duties justified, and subservience. Implementation of education given. Number third, address the following family member sabotage behavior. Rishnuka, although family members express a willingness to be substances free, the truth of interactive dynamics is that they may subconsciously not want the pupil to recuperate because it would compromise their place in the relationship. Implementation को address the following family member. Number 4 होगा give the patient and family accurate information on the consequences of unhealthy and addictive behavior on the family and what to anticipate following discharge. Reshnuka, most patients are unaware of the complexities of addiction. If a patient obtains medication lawfully, he or she may assume that this does not arouse abuse and dependence. Implementation होगा accurate information given. Number 5 होगा include family member in discharge planning and follow up. Reason होगा alcohol addiction is a family disease. Family member require assistance in transitioning to the unusual habit of recovery and abstinence because the family and has been so involved in the dealing with the substance misuse. Implementation का family member included. After writing these interventions, we write the evaluation steps. तो देखते हैं इसमें केयर प्लान नंबर 5 का evaluation. Evaluation हो गया पर now patient participate in family and social program. तो इस तरह से हम केयर प्लान नंबर 5 को यहाँ कंप्लीट करते हैं. तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो. आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा and share this video with your friends and subscribe my YouTube channel Anand's Nursing File Preparation for the Nursing Competition Examination. जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा यूट्यूब चैनल तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. थैंक यू.